Hello students, let's continue with our chapter refraction of light. In the previous video I explained you the basics, that what happens, why refraction takes place. It because when the light travels from one medium to another, it may travel from a rare medium to a dense medium, or the light may travel from a dense medium to a rare medium. The speed of light will change. The speed will change, and that is why the light will bend. The light will bend. This bending of light ray is called as refraction. Okay, and this bending may be of two types. It may be towards the normal. It may be towards the normal, or it may be away from the normal. Okay, let's give you one example here. This is the normal I have drawn. Here, let's say this is the rare medium and this is the dense medium. These are optically rare and optically dense. Okay, and here in this case, let's take this is the dense medium and this is the rare medium. So when the light ray incidents on the surface, this is the incident ray. Okay, and this is called as the point of incidence. This line, dotted line, is the normal. Now when the light ray, incident ray, enters from a rare medium to a dense medium, it bends towards the normal. You can see the bending. It bends towards the normal. Okay, normal की तरफ जा रही है. This is normal. It is bending towards the normal. When it goes from rare to dense, it bends towards the normal. Okay, let's say I'll name this. This is the first case, second case. This is the first one and this is the second one. And here when it goes from dense to rare, when the same light ray goes from dense to rare medium, it will bend away from the normal. Okay, it will bend away from the normal. Now how to remember this? I gave you a short form also, that from dense to rare, it is away from the normal. Okay, so if you see the initials D, R and AW, so this makes the word draw. Dense to rare, away from the normal. Okay, you can remember it like this, and vice versa is for rare to dense. Okay. Now this is what we had done last time, and then we studied what is refractive index. This was the formula which we did for refractive index. This was the symbol, refractive index, which is speed of light. Two formulas we had done: speed of light in air or vacuum, you can say, upon the speed of light in that medium, whichever medium you are referring to, or whichever medium you have to find the speed, the refractive index. Or another formula was speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. Okay, see, because always light is entering from one medium to another medium. Okay, so when you say that the refractive index of water, let's say the refractive index of water is 1.33, so that means it is with respect to air. With respect to air means that if the second medium is water, the light which is incident on the surface of water, this light is coming from air. Okay, and then it's going inside water. So you are finding the refractive index of water with respect to air, and always we find the refractive index of all substances, all mediums, with respect to air or vacuum. Okay. So if you want to calculate the refractive index not with respect to air, with respect to something else, then you have to use this formula. Speed of light in medium 1, which is the first medium here from where the light is originating, and upon the speed of light in medium 2, where the light is going. Ray is coming from this medium and going in this medium. Okay, so this is medium 1 and this is medium 2. Okay, so whenever light ray comes
from this medium 1 and goes in this medium 2, we say that the refractive index of this medium with respect to this medium means light came from that medium and entered this water. It came from air and entered water. Okay, this only happens when the surface is transparent. Okay, transparent, you know that, because opaque surface reflection will take place. Okay, transparent, translucent, semi-transparent, on those surfaces refraction takes place. Okay, now this was clear. Now this is all what we did in the previous lecture. Today we'll study the relationship between the wavelength. Relationship between the wavelength. Now what is it? See, if the light ray is coming from one medium to another medium, okay, let's say the wavelength of when the light was in air, okay, the first medium, this light ray, let's say its wavelength was lambda, okay, and when it entered the another medium, its wavelength will change. Okay, wavelength changes when the light ray enters from one medium to another medium. Okay, so when it entered in the second medium, let's say the wavelength became lambda dash. This is the new wavelength. This was the old wavelength. This is the new wavelength. Okay, so now how to find this new wavelength? Now the relation is, if you want to find the new wavelength, the wavelength of the light ray in the second medium where it is going. Okay, see, this wavelength you already know from where the light is coming. Now it is going in this medium and you want to know what is the wavelength in the new medium. So that wavelength, how to find this wavelength? The old wavelength which is there upon the refractive index of this medium. The refractive index of this medium. This is the formula which you have to use to find the new wavelength. The wavelength in the medium where the light is going now. Okay, so for example, if the light is going from, let's say, water to glass. Okay, if the light is going from water to glass, if you want to know the wavelength of glass, as I'll say, I write it like this, wavelength of glass. So what I'll do, I'll write the wavelength of water and I'll divide it with the refractive index of glass with respect to water. Okay, this is how we find the wavelength. Now to study more about the refractive index, that what can affect the refractive index of a medium. Okay, so let's understand the factors affecting the refractive index. Factors affecting the refractive index. First factor, the basic factor, is the optical density. That means how much is the difference between the density of the two mediums. That will on that it will depend the refractive index. Like for example, see, if the, I'll draw two diagrams here. Okay, here in this case the light is coming from water to glass, and in this case let's say the light is coming from air to glass. Okay, so let's say the density of water is 1.2, density of glass is 1.4. Here the density of glass is 1.4 and density of air is 1. So you can see the difference between the density is more here because air से glass में जा रहा है, तो density definitely glass की काफ़ी ज़्यादा होगी air से. Okay, अब water को अगर compare करें तो water already थोड़ा ज़्यादा dense है air से, correct? Because it is a liquid, so it is denser. And then water से glass में जा रहा है, तो difference तो है density का, because this is liquid and glass, liquid and solid. बट फिर भी कम है डिफरेंस, 0.2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 0.4 का डिफरेंस है. ओके, सो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस केस. ऑब्वियसली बिकॉज बेंडिंग यहाँ पे ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा चेंज हो रही है, स्पीड ज़्यादा चेंज होगी एंड बेंडिंग ज़्यादा होगा. ओके, सो ऑप्टिकल डेंसिटी, the factors affecting refractive index. So refractive index depends upon the optical density. More the difference in optical density, greater is the refraction or refractive index.
Okay, then there are some normal factors also, like temperature. So what happens is, if the temperature increases, the speed of light increases. Okay, so if the speed of light increases, they have inverse relationship with the refraction. So here the refractive index will decrease. Now what is the in-depth explanation of this, that why temperature increases, speed of light increases and refractive index decreases? This is not there in your book in detail, in great detail, but still I'll explain you. I'll give you a rough idea, although you have to remember just the relationship. They have only given this in 2 lines, but I'll give you a rough idea. See, what happens is, when the light goes from one medium to another medium, its speed is changing. Okay, let's say it is going from air to water. So water is more dense, so that the speed of light will decrease, correct? Compared to here, the SOL means speed of light. So when the light will travel from air to water, the speed of light will decrease. But if the water has high temperature, this high temperature will not let the speed of light decrease more. ओके, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट कम होने वाली थी उसको ये थोड़ा कम स्टॉप कर देगा, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा होने से स्पीड ज़्यादा होती है लाइट की. सो दिस हाई टेम्परेचर विल नॉट लेट द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज. सो अगर स्पीड ऑफ लाइट कम डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा, एंड दैट इज वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिक्रीज. ओके, although this explanation is not there in your textbook, so if you have understood it, very good. If not, you just remember the temperature increases, speed of light increases, and that is why the refractive index will decrease. Okay, the third point, the color or wavelength of the light. The color or wavelength. Now here you have to remember that the speed of light of all colors is same. We are going to study this in depth in the part 2. That speed of all colors is same in air. But when the light goes in some other medium like water or glass, the speed of light for different colors is different in dense mediums. Means सारे colors, let's say Vibgyor, 7 important colors. Okay, all these colors have same speed in air, but when these colors go in glass, सबकी स्पीड चेंज हो जाएगी. ठीक है, वायलेट की अलग, इंडिगो की अलग, ब्लू की अलग, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, their speed will change. Okay, so if their speed will change, definitely it will affect the refractive index. Okay, so what is the final relation between this? So it is that the refractive index of a medium is, you can write it in your textbook also, inversely proportional to the wavelength. That means refractive index of the medium will decrease if the wavelength increases. Okay, and further you have to remember that speed of light and refractive index have direct relation. Wait, I'll give you this third point. See, always keep your textbook with you. Okay, and in my textbook I'm on page number 74. We are doing the factors affecting the refractive index, the third point. So near the third point, you note down this point. You note down that speed of light is directly proportional to refractive index, which is indirectly proportional to wavelength. If you remember this in simple form, you don't need to remember such a big point. ठीक, you can directly say अगर speed of light ज़्यादा है तो refractive index ज़्यादा होगा, because wavelength कम होगा. Speed of light and wavelength are inversely proportional. Okay, so let's say if we say about violet light, so violet has the maximum speed. If it has the maximum speed, it has the minimum wavelength. Okay, and that is why it will have high refraction.
Okay, so this you will study this in detail in spectrum chapter, where you have to study about each and every color. Okay, but here you have to remember that speed of light is directly proportional to the refractive index, which is inversely proportional to the speed to the wavelength. Okay, now next is the principle of reversibility. Now what does this principle say? That if, let's say, the light ray is traveling from air to water, okay, and the angle of incidence, let's say, is 30 degrees. Okay, so from rare to dense it will bend towards the normal. Okay, and let's say you get the angle here as 20 degrees. This is called as the angle of refraction. This is the angle of incidence, denoted by I. This is denoted by R. Okay, this is the path which light followed. Now if the source of light was here, correct, the light came from air and went in water. Okay, but what if now the light is going from water to air? What will happen then? Okay, so if you incident the light ray from the same path, मतलब इसी एंगल से मैंने इंसिडेंट किया, मैंने 20 डिग्री के एंगल से वाटर से लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है. यू नो दैट डेंस टू रेयर, नाउ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंस टू रेयर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो अवे मतलब वो लाइट की रे ऐसे जाएगी, ठीक है, it will bend away from the normal. Okay, and this angle if you calculate you will get this angle as 30 degrees. Means if you notice something, जब rare to dense में गया, ठीक है, तो अगर इंसिडेंस 30 था तो रिफ्रैक्शन 20 मिला, एंगल 20 डिग्रीज. ओके, बट अभी ये रिवर्स प्रोसेस किया, अगर 20 डिग्री से इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्शन विल बी 30 डिग्रीज. ओके, मीन्स लाइट फॉलोज द सेम पाथ when it goes from air to water or it goes from water to air. This is called as the principle of reversibility. Okay, that जो angle of incidence है उससे हमें same angle of refraction मिला, वही angle of refraction if it becomes the incidence angle then you will get this angle as the refracting angle. Okay, so मतलब light की रे जो path है उसको follow करती है, जब वो ऐसे आई तो उसने ये path follow किया तो return के वक्त भी वो same path follow करेगी. This is called as principle of reversibility. Okay, and इस reversibility की वजह से what happens is, see, refractive index formula I gave you that it is sin I upon sin R. This is the formula I gave you. Okay, sin I upon sin R. So medium 2, medium 1. So in this first case, if you calculate the refractive index, you will get sin 30 upon sin 20, because this was angle of incidence, this was refraction. If in this case you calculate, that is refractive, this is the medium 1 and this is medium 2, names given to them. So this time it is going from 2 to 1, medium 2 से 1 में जा रहा है, correct. So इसका क्या होगा, angle of incidence this time is 20, so sin 20 upon sin 30. ओके, सी, जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो फॉर्मूला इज 30 अपॉन 20, साइन 30 अपॉन साइन 20. जब यहाँ से इधर जा रहा है तो इट इज साइन 20 अपॉन साइन 30. ओके, सो इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा. ओके, जब इसका रिफ्रैक्ट निकालोगे तो इट विल बी साइन 30 अपॉन साइन 20, और जब इसका निकालोगे तो इट विल बी साइन 20 अपॉन साइन 30. ओके, सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन से ऑफ वाटर टू एयर will be 1 upon the refractive index of air to water. Okay, or you can write it like this also, 2 to 1 from medium 2 to medium 1 is reciprocal of from medium 1 to medium 2. Okay, because same angles है, बस खाली पहले incident 30 था और refraction 20 था, यहाँ पे incident 20 है, refraction 30 है, तो definitely जो refractive index मिलेगा that will be reciprocal of each other. Okay, this is called as the principle of reversibility. Now there is an experiment which you might have done in reflection chapter using a glass slab, or you are supposed to do it in school laboratory if
the school allows you once we are free. So that is the experiment using the glass slab. Okay, to understand the refractive index, to understand the laws of refraction, and to understand a concept that is called as lateral displacement. Okay, lateral displacement. So what is this lateral displacement now? See, for example, this is a glass slab. Just to show that the glass slab is a dense medium, I just shade a little bit so that you can easily see the difference. I'll shade it a little bit for you to understand the difference. So this is a glass slab. Okay, this is glass, here it is air, this is also glass, and outside it is air. Now if a light ray incidents on the surface of the glass slab, okay, this is the point of incidence. At the point of incidence we always draw normal. Okay, we always draw normal at a point of incidence. Then here it is going from air to glass. Air to glass means it was going from rare to dense. Okay, that means it will bend towards the normal. Okay, you have to learn this now. See, I have given you draw formula. Draw means dense to rare away होता है, तो rare to dense towards होगा. ठीक है. Now it will go towards the normal. Towards the normal means जो लाइट रे है, ठीक है, अगर जस्ट सेकेंड, अगर ये लाइट रे बेंड नहीं होती तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस स्ट्रेट. The light ray would have gone straight. Okay, but we know that when the light ray enters another medium from glass to air, it will bend towards the normal. Towards normal means कुछ ऐसा bend हो जाएगा. Correct, it bend towards the normal. Now at this point again the medium is changing. See, यहाँ पे medium change हुआ था, air से glass हुआ था. जब लाइट की रे यहाँ पहुंचेगी तो वापस ग्लास से एयर होने वाला है. करेक्ट, ग्लास से एयर, ग्लास से एयर मीन्स डेंस से रेयर होने वाला है अभी. सो डेंस टू रेयर इट विज ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सो आई विल ड्रॉ नॉर्मल हियर. ओके, सो अब ये जो लाइट की रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, सी यहाँ पे वो टूवर्ड्स नॉर्मल गया था बिकॉज एयर टू ग्लास था. अब ग्लास टू एयर है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो इट विल गो लाइक दिस. ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व दैट अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट की रे स्ट्रेट जाने वाली थी, ऐसे स्ट्रेट जाने वाली थी. ठीक है, बट इस ग्लास स्लैब के वजह से ये लाइट की रे जो है वो शिफ्ट हो गई. इट गॉट शिफ्ट ऑन दिस साइड एंड नाउ इट इज गोइंग अगेन इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो आई जस्ट डार्कन दिस रे. This could have been the original path of the light ray, but because of the glass slab, the light ray got shifted and now it is going in this direction. Okay, so अब ये डायरेक्शन से बाहर जाएगी. इसका मतलब कि जो लाइट रे जो ऐसे जाने वाली थी वो अब शिफ्ट हो गई इधर. करेक्ट, वो इतना शिफ्ट हो गई लाइट रे. ओके, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो स्ट्रेट ही चली जाती, बट वो अभी शिफ्ट हो गई इस साइड में. क्यों शिफ्ट हुई? बिकॉज ऑफ द ग्लास स्लैब. Okay, this shift is called as lateral displacement. Lateral means sideways. Lateral displacement. Okay, I hope you have understood this part. See, I'll show you a small video based on it. See this. Air to glass. Light is bending from here.
This is the incident medium. This is also called as a refractive medium. And now see here again, because the medium is changing, the light is again bending. Okay. These are the boundaries. Refraction always takes place at surface. Now this is the normal which we draw. Okay. This is the incident angle. And this is the angle of refraction. So this was the same thing which I said, that light will get shifted because of this glass slab. अगर ये glass slab नहीं होता तो light straight चली जाती, but glass slab की वजह से वो shift हो गई है यहाँ पे. ठीक है, ये जो shift है lateral shift, that is called as the lateral displacement. Okay. Now this lateral displacement will depend on which factors? So the factors on which the lateral displacement depends. Pretty simple factors. First one is the thickness of this glass slab. Okay, it will depend upon the thickness of this glass slab. अगर ये glass slab थोड़ा सा ही thick है, ठीक है, तो ये जो distance है, जो displacement है वो कम होगा. Okay, see, for example, अगर ये glass slab सिर्फ इतना सा thick होता, ठीक है, तो लाइट रे आती, थोड़ा सा बेंड होती एंड देन वापस चली जाती. करेक्ट. सो ये अगर बेंडिंग को अगर हम ट्रेस करते तो सिर्फ इतना सा डिस्प्लेसमेंट था, कम था कंपैरेटिवली. लेकिन अगर ये ग्लास स्लैब बहुत ही मोटा होता, वेरी थिक, ओके, सो जो बेंडिंग होती वो भी बहुत ज़्यादा होती ऐसे. सो जो बेंडिंग होती ये कितनी ज़्यादा होती. करेक्ट. सो ग्लास स्लैब जितना थिक होगा उतना ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस. ओके. सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. कौन से एंगल से आप इंसिडेंस कर रहे हो. अगर आप ज़्यादा बड़े एंगल से इंसिडेंस कर रहे हो सो डेफिनेटली द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Okay, more the angle of incidence, more is the lateral displacement, directly proportional. Okay. And the third point is dependence on the refractive index. Okay, air to glass था तो जितना इसका refractive index होगा उतना ये bend होगी लाइट की रे. ठीक है. लेकिन अगर ये water to glass होता तो we know कि bending कम होता बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. ठीक है. अगर कम बेंड होगा तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा. ओके. तो कहने का मतलब क्या है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उतना ज़्यादा लाइट बेंड होगी और उतना ज़्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. ओके. सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके. So we have studied three factors: thickness, angle of incidence, and lateral displacement. Okay. The next topic is multiple refraction, multiple images in a thick plane mirror with having a glass plate. Now this is a little different. Understand carefully what we are doing in this case now. Okay. Let's say I have a glass slab. I'll shade the glass slab a little bit. Why do I shade it? So that the understanding becomes easier. We are easily able to understand that we are entering from one medium to another. Okay, so this is a glass slab. Now I have kept this glass slab on a opaque surface, on a plane mirror, let's say. Plane, do you understand what is plane mirror? Plane mirror means which has one side as a reflecting surface and other side is opaque.
Remember in रिफ्लेक्शन चैप्टर 9th स्टैंडर्ड यू हैड कोटिंग ऑन वन साइड. ठीक है, तो एक ही साइड से रिफ्लेक्शन हो सकता है, सिर्फ रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता. ओके, यहाँ पे आई हैव केप्ट अ प्लेन मिरर. इधर एक प्लेन मिरर रखा है और उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा है, एंड दिस इज द ओपेक साइड, कोटिंग साइड ऑफ द प्लेन मिरर. सो यू कैन इमेजिन दैट अगर लाइट रे इसके ऊपर फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी पूरी, यहाँ पे जा ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज ओपेक, दिस इज ओपेक सरफेस. ओके, सो दिस इज अ ग्लास स्लैब and this is a plane mirror. Now what I will do is we will incident a ray of light on this glass slab and see what will happen to that ray of light. Let's say this is the source of light. From here we will incident a ray of light. Okay, and you are looking, here is your eye, you are looking this phenomena from here, you are looking this phenomena from here. Now what will happen is, see, when the light ray will incident on the surface, this is the incident ray, it will incident on the surface. Now this is air and this is glass. So क्या होगा, जब glass to air जाता है तो हमें पता है what happens is bending takes place. Okay, so light ray will bend. Correct, light ray bend हो गई. There is one more thing. In the beginning of the chapter I had told you that when the light ray incidents on a surface, okay, 96% of the light enters the another medium, but 4% of the light gets reflected. If you remember, I told you that 4% सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, बाकी 96% अंदर जाता है. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे यूज होने वाला है. ओके, ठीक है. एंड वन मोर थिंग यू नो ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट अगर एक मिरर है यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ से अगर आप उसे देख रहे हो कोई ऑब्जेक्ट को, तो अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द मिरर, वो मिरर के अंदर, ये मिरर है, करेक्ट, दिस इज द मिरर. सो वो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको कहाँ दिखेगा मिरर के अंदर, लाइट की रे इधर आई और आपके पास गई, ऑब्जेक्ट से ऊपर से लाइट की रे आके गई, एंड यू विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट इनसाइड द मिरर हियर. ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अगर यहाँ पे मिरर के सामने रखा है तो वो मिरर के अंदर यहाँ दिखेगा ऑब्जेक्ट. ओके, वैसे ही सी, इंसिडेंट रे, लाइट रे केम फ्रॉम दिस पॉइंट ए. ओके, लाइट रे केम एंड वो बेंड हो गई बिकॉज एयर टू ग्लास है. ठीक है, अब ये पॉइंट पे क्या होगा, ये पॉइंट पे क्या लाइट की रे आगे जा सकती है, इट कैन नॉट गो फर्दर. ओके, बिकॉज ये प्लेन मिरर है, ये आगे जाने नहीं देगा, तो सारी की सारी लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट. सारी की सारी लाइट यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, एंड देन ये पॉइंट पे अगेन इट विल गो फ्रॉम ग्लास टू एयर. ठीक है, तो इतना पार्ट समझ गए, लाइट की रे आई, बेंड हुई और पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हुई बिकॉज दिस इज अ प्लेन मिरर. बट अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना, जब लाइट की रे यहाँ पे आई थी तो 4% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हुई थी यहाँ से. ओके, 4% लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी, तो यहाँ से बाहर जाएगी. आई पर्पसली मेकिंग इट विद पेंसिल टू डिफरेंशिएट. ओके, देन अगर 4% लाइट यहाँ से बाहर गई तो कितना परसेंट अंदर गई, 96% अंदर गई. करेक्ट, दिस 96%, ये 96% रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे आया और यहाँ से बाहर जाएगी. ओके, तो ग्लास से एयर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऐसे.
ओके, सो ये 4% की लाइट की रे है जो आपके आइज़ की तरफ जाएगी, 4%। ओके, फिर ये 96% यहाँ आया, रिफ्लेक्ट हुआ, एंड ये यहाँ से बाहर जा रही है। सो ये कौन सी लाइट की रे है? 96% वाली, ठीक है। बट इस पॉइंट में जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी होगा, मतलब जब लाइट की रे यहाँ से आगे जाएगी तो थोड़ी सी लाइट की रे वापस इधर अंदर आ जाएगी। ओके, कितनी आएगी? सिर्फ 4%। सी, ऑलवेज जब रिफ्रैक्शन होता है ना तो कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, बट कुछ 4% बाहर चली गई। वैसे ही यहाँ से लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई, तो 4% वापस अंदर चली गई, ठीक है। और ये 4% वापस रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी यहाँ पे। ओके, 4%, ठीक है। मैं परसेंटेज क्यों लिख रहा हूँ और इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है, परसेंटेज लिख रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू विच इमेज विल बी द ब्राइटेस्ट। ओके, सी नाउ दिस 3 rays आर कमिंग टू यू, टू योर आइज। ओके, ये फर्स्ट 4% वाली रे है, सो इसका इमेज आपको इस ग्लास के अंदर दिखेगा, समझो यहाँ पे। ओके, ये जो पॉइंट है, सोर्स ए है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। देन इस सेकेंड रे की वजह से यू विल बी एबल टू सी द इमेज हियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्ड रे यू विल बी एबल टू सी द इमेज हियर। 3 इमेजेस दिख रहे हैं। ओके, लेट्स से इमेज 1, A1, A2, A3, ऑल्दो इट विल कंटिन्यू, थोड़ा सा यहाँ पे वापस जाके कंटिन्यू होते रहेगा इनफाइनाइट। ओके, और उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। सोचिए, देखो पहले यहाँ से 100% रे आई थी, 96 अंदर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ और बाहर गया, बट उस 96 का 4% खाली वापस अंदर गया, ठीक है। सो ये फर्स्ट रे जो थी ये सिर्फ 4% वाली रे थी। ये आगे जो रे आई है ये भी 4% वाली रे है, लेकिन जो ये सेकेंड रे है दैट इज़ 96% वाली रे है, ये जो आपके आंखें तक पहुंची है। सो जो इमेजेस यहाँ बनने वाले हैं, इसमें से जो सेकेंड इमेज होगा, जो इस 96% की वजह से बना है इमेज, ओके, दैट इमेज विल बी द ब्राइटेस्ट। That image will be the brightest. This is what this experiment shows. The second image is always the brightest. Okay. See, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, जैसे अगर ये मिरर है एक, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एंड यू आर लुकिंग इट फ्रॉम हियर। सो ये ऑब्जेक्ट लाइट की रेस पे ऑब्जेक्ट पे गिरती है, देन आपकी आंखों में आती है, एंड व्हेन यू ट्रेस दिस बिहाइंड, यहाँ पे उसको वो इमेज दिखता है। वैसे इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, 100% लाइट की रे आई, सिर्फ 4% रिफ्लेक्ट हुई, 96% अंदर गई, रिफ्लेक्ट होके बाहर आई। सो दिस 96% रे से जो इमेज बन रहा है, सेकेंड इमेज, दैट विल बी द ब्राइटेस्ट इमेज। ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू नो इन दिस part. That's it. We have completed the part A. The next video I'll start with the part B of the chapter. Okay, thank you.